I'm sure you will agree that in your office, strong communication skills are appreciated. जो शख्स अच्छे से अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाता है उसको बेहतर प्रमोशन, बेहतर ग्रोथ, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही है कि नहीं? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन फ्रेजेस की जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी मीटिंग्स में। अक्सर देखा गया है कि मीटिंग्स में आपके पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं, अच्छे पॉइंटर्स होते हैं, लेकिन आपके अंदर वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस, वो हिम्मत नहीं होती है कि हम आगे बोल पाएँ। लिहाजा जो शख्स बोल पाता है उसको चांस मिल जाती है, उसकी तालियां बज जाती हैं और आप बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हो। On this channel, my videos are for three types of people. Those who are at the basic level, those who are at the intermediate level, and those who are at the advanced level. And this video is for those who are at the intermediate level. So here are some of the basic phrases that you can use in business meetings. So example, if you have to go for introduction, आप क्या कह सकते हो? You might say, I'd like to start by welcoming Mr. So-and-so. Or I'd like to start by welcoming Miss Suzanne from England. Whatever works. या फिर, thank you for taking the time to attend this meeting. या फिर I'd like to introduce the Australian VP of Sales, Mr. Brown, blah blah blah. चलेगा? अगर आपको मीटिंग अपनी स्टार्ट करनी है तो कैसे कर सकते हो? You can say, all right, so shall we make a start? Use these words, use these phrases. इस अंदाज में बोलने की कोशिश करिए, लिखिए इन पॉइंटर्स को, आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी मीटिंग में। या फिर आप कह सकते हो, all right, so let's start with the first point on the agenda. So let's begin. या फिर the first item on the agenda is about the sales for the month of June. तो आपने एजेंडा लिखा हुआ है कि इस मीटिंग में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, and then you start with it. अब you have the phrases, यूज़ करना है इसको। नेक्स्ट कैन बी, अगर आपको मीटिंग रूल्स इस्टेब्लिश करने हो, व्हाट आर मीटिंग रूल्स, कि मीटिंग किस तरीके से फ्लो करेगी, कि कब आपका ब्रेक होगा, कब आपका लाइक Q&A राउंड होगा। सो आप क्या कह सकते हो? Let me set up the ground rules for everyone. We have the Q&A towards the end. So whatever questions you have, you can note it down and we can take it up in the Q&A session. In case you have online meetings, वहाँ पे भी आप ये use कर सकते हो. You can always talk about how can we have more effective meetings. I'd like to have everyone's input on that. तो आपने स्टार्टिंग में बता दिया कि आप क्या चाहते हो, कि we are here to take ideas from everyone. जैसे so what can we do to overcome the typical meeting problems? Or does anyone has any suggestion for a meeting rule? तो यहाँ पे आप अपने rules लोगों को नहीं दे रहे हो कि हमें ऐसे करना है. You are open कि बताओ इस मीटिंग को कैसे आगे लेके जाना है. जैसा बोलोगे कि ब्रेक अभी लेना है, बाद में लेना है. अगर सपोज किसी को अपने कुछ क्वेरीज रेज करनी है, कंप्लेंट्स रेज करनी है, कोई चैलेंज फेस हो रहा है, तो किस तरीके से चाहते हो आप बता दो. सो इट्स लाइक मोर ऑफ अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, राइट? अगर आपको लोगों से डील करना हो मीटिंग के दौरान, हाउ टू डील विद पीपल, यू माइट से थैंक्स फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन मिस्टर XYZ, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन ब्ला 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 ब्ला. आ समझ? या फिर I like to hear what other people think. What do you say? या फिर so Mr. XYZ, how do you think we should approach this? अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि आपके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, you can use this phrase. एक कैटेगरी है where you have to go to the next point. कैसे करोगे आप? Alright, so we have covered this item on the agenda. Yes, let's go to the next point. या फिर have we finished this item or any other idea or comments on that? Let's have a look into that. या फिर let's move on to the next item on the agenda. Maybe the sales for the month of June. तो इस तरीके से आपने step by step next idea पे जा रहे हो. अब आती है बात where you have to appreciate the ideas. हम लोग appreciation करने से कतराते हैं. किसी को नीचा दिखाना है, खींचना है नीचे, तो सबके सब आगे आ जाते हैं, लेकिन किसी का पॉइंट अगर अच्छा है तो हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं. सो यू माइट से, हे दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर लेट्स हैव सम मोर आइडियाज ऑन इट, इट मेक्स सो मच ऑफ सेंस, या फिर दैट्स अ गुड आइडिया, लेट्स एक्सपैंड ऑन दैट, एनी मोर सजेशंस ऑन इट, इंटरेस्टिंग आइडिया, एवरीबॉडी मोर आइडियाज, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन.
in the end, if you have to summarize, कैसे करोगे? आप summarize करने के लिए क्या phrase use कर सकते हो? You might say, so before we close, let me summarize the main points. Point number 1, point number 2, point number 3. या फिर, so to sum up what we have discussed, blah, 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 blah. So we discussed 3 main points. Point number 1, point number 2, point number 3. I hope you love this video. In my upcoming videos, I'll talk about how you can speak fluently and confidently in front of anyone. If you haven't subscribed, do it right away, and I'll see you in my next video. Till then, stay awesome, stay productive.